Now students, here you can see the diagram. This is the diagram of your digestive system. In this diagram, they have shown you the organs which are related with the function of digestion. Digestion starts from the mouth itself. Digestion starts from mouth. When we swallow, one more thing, that this whole tube, this whole digestion starts from here, and this whole structure, these tubes, these all together are known as alimentary canal. Now when you eat food, your food goes to your mouth. Your digestion starts in mouth only. You chew the food, and during that some saliva secretes in your mouth. Now what is saliva? I have already told you, saliva is the chemical which releases from your mouth. एक ऐसा केमिकल होता है, कैसा जिसे आप थूक बोलते हो अपने हिंदी में आप जिसको, उससे क्या होता है, आपका जो फूड होता है वो च्यू होने में हेल्प होती है, और दूसरी बात डाइजेशन भी होता है उससे फूड का. Then after that your food goes down to this food pipe. This is a food pipe. We also called it as a esophagus. From here the food reaches to stomach. This is the stomach. This is liver, but food goes to, from food pipe the food goes to stomach. Now in stomach also, with the help of some digestive juices or chemicals, the food get digested, and then after that it reaches to small intestine. This is your small intestine. This part is joined with this part. ये वाला पार्ट इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, और स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. इन स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड गेट डाइजेस्टेड. फूड का डाइजेशन माउथ में भी हुआ, स्टमक में भी हुआ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा. फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द लॉन्ग ट्यूब. स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्ग ट्यूब, कॉइल्ड ट्यूब, ऐसी घूमी हुई ट्यूब होती है. फ्रॉम दिस स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड रीचेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ये लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है. ये देखिए, दिस ट्यूब इज़ स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन बट वाइडर. चौड़ी ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन लेंथ में छोटी होती है. देन दिस फूड रीचेज टू लार्ज इंटेस्टाइन, एंड ultimately the undigested food reaches up to the last part of this large intestine, rectum. This is the last part of large intestine, rectum. I have told you that this large intestine is also divided into three parts: colon, cecum and rectum. So this is the last part. It is divided into colon, cecum and rectum. In the same way, this small intestine is also divided into three parts: jejunum, ileum and duodenum. Now from here the undigested food gets out from anus. जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, हमारी बॉडी जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, दैट फूड इज़ द अनडाइजेस्टेड और वेस्ट पार्ट ऑफ द फूड विच इज़ गेट आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एनस. So this is the whole structure of digestive system.